मार्केट के अंदर देखिए सब लोग वेट तो कर रहे हैं पॉलिसी का, स्पेशली बैंकिंग और बैंकिंग से जुड़े हुए काउंटर्स वेट कर रहे हैं। इसलिए बैंक निफ्टी बार बार हरे निशान लाल निशान की तरफ उछाल कूद हो रहा है, लेकिन निफ्टी थोड़ा स्टेबल है बिकॉज ऑफ आईटी गुड वेटेज, और इसकी वजह से अब हम पूरे पैनल के साथ अपनी इस पॉलिसी की कवरेज को शुरू कर रहे हैं। मेरे साथ दो मेहमान मेरे को दिख रहे हैं स्क्रीन पर। दीपक अग्रवाल जो कि CIO हैं डेट डिविजन्स के कोटक AMC के, साथ ही नम्रता मित्तल चीफ इकोनॉमिस्ट हैं SBI म्यूचुअल फंड से। नम्रता जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। और दीपक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नम्रता पहले आपसे शुरू कर रहे हैं। हमारा पोल ये कहता है, पोल के ग्राफिक्स दिखाइएगा, नम्रता ने शायद नहीं देखे होंगे तो एक बार आप देखिएगा नम्रता जी। पोल ये कहता है कि 70% लोगों का मानना है कि इस बार ब्याज दरों में कटौती नहीं होगी, बट नियर अबाउट 23 to 25% लोग ये कह रहे हैं कि हाँ ब्याज दरों में कटौती इस बार भी हो सकती है, वो 0.25% तक होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। आप किस कैंप में है, 70 वाले में या फिर 25% वाले कैंप में? नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं आपके पोल से सहमत हूँ। हमारा भी यही मानना है कि इस पॉलिसी में ब्याज दर वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये पिछले पॉलिसी और इस पॉलिसी से ग्रोथ इंडिया में थोड़े सॉफ्ट हुए हैं, और महंगाई भी RBI का आंकड़ा था कि Q2 में 4.4% होगा। ऐसा लग रहा है कि RBI के आंकड़े से थोड़ा कम रह सकती है महंगाई। तो ऐसे में हमें यह भी दिख रहा है कि FY25 की ओवरऑल CPI इन्फ्लेशन भी RBI के 4.5% के अनुमान से थोड़ी कम रह सकती है। तो हम इस पॉलिसी में काफी ज्यादा ये देखना चाहेंगे कि RBI का ग्रोथ और इन्फ्लेशन को लेकर के अब क्या नया आउटलुक है, क्या वो अभी भी उतने ही रोबस्ट ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर रही है और इन्फ्लेशन को लेके चिंतित है कि थोड़ा वहां पे एक संतुलन आया है। दीपक जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूं। सर आपसे प्रश्न ये होगा कि देखिए US फेड ने अपने दरों में कटौती की आधे % की। अभी ECB की बैठक है, शायद 17 अक्टूबर की डेट है, उम्मीद की जा रही कि ECB भी अपनी दरें घटाएगा। तो कहीं ना कहीं होता है ना कि जब चौतरफा जब दरें घट रही हो तो उसमें उम्मीदें बढ़ जाती हैं। हालांकि अमेरिका की जमीनी हकीकत हमारे जमीनी हकीकत में फर्क है। हमारी GDP ग्रोथ मजबूत है, वहां पर थोड़ी सी मंदी की बातें हो रही थी। आप ये बताइए कि आपको क्या उम्मीदें हैं, और क्या RBI को अगर दरें नहीं घटानी है, जो स्टांस की बात हो रही है कि हॉकिश है, क्या उसको न्यूट्रल कर देना चाहिए, उसमें कुछ बदलाव की उम्मीद आप करके चल रहे हैं? गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो जो आपने पोल किया है जहां पे 70% रिस्पोंडेंट आज पॉलिसी कट नहीं देख रहे हैं, हम भी वो कैंप में हैं। यस, US फेड ने कट किया है और US फेड ने गाइडेंस दिया है कि वो यहां से लेकर दिसंबर 25 तक एडिशनल 150 बेसिस पॉइंट रेट कट करेंगे। 2 रिसेंट जॉब्स डेटा के बाद वो क्यूमुलेटिव रेट कट एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम हुई है। बाकी सेंट्रल बैंक्स भी ग्लोबली रेट कट कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंडोनेशिया ने रेट कट किया है, आज सुबह न्यूजीलैंड सेंट्रल बैंक ने रेट कट किया है। तो यस, ग्लोबली एक ऐसा माहौल है जहां पे सेंट्रल बैंक्स रेट कट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे रेट कट के पहले यस आपने सही पॉइंट पकड़ा कि आज हमें लग रहा है कि RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस शायद चेंज कर सकता है। और जो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन है हमारे हिसाब से एटलीस्ट हमारे हिसाब से लास्ट 2-3 पॉलिसी से RBI को स्टांस चेंज करने की बेसिकली वी बिलीव दैट देयर इज जस्टिफिकेशन दैट RBI ने अपनी स्टांस न्यूट्रल चेंज कर देना चाहिए। और न्यूट्रल करके जैसे ये क्वार्टर में इन्फ्लेशन नीचे आई है, RBI की प्रोजेक्शन थी कि ये पिछले जुलाई से सितंबर क्वार्टर में एवरेज इन्फ्लेशन 4.40 रहेगी, लेकिन उसके मुकाबले इन्फ्लेशन करीब 4.10 के करीब है। तो RBI ने आज स्टांस चेंज करके एक ग्राउंड लेकर देना चाहिए कि अगर GDP आपकी थोड़ी सॉफ्ट होती है तो दिसंबर या फरवरी महीने से आप रेट कट करने के लिए तैयार है, ये मैसेज RBI दे सकता है। तो यस, आज RBI ने हमारे हिसाब से अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन से न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट करनी चाहिए। स्टांस चेंज हो सकता है। नम्रता, एक क्वेश्चन के लिए मैं वापस आपके पास आऊंगा। देखिए फाइट बहुत पुरानी है, सेम एजेंडा की, आइडियोलॉजी की, कि आप ग्रोथ की तरफ ज्यादा है या फिर इन्फ्लेशन की तरफ ज्यादा है। लेकिन लास्ट टाइम की जब पॉलिसी आई और पूरा फ्रेमवर्क हम देख रहे हैं, तो लगता नहीं कि RBI को अब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन की चिंता करने की जरूरत है। अब वो इस जगह पर आ गई है। खुद RBI कहते हैं अब हमारे पास कंफर्टेबल है, हमने जो मेहनत की थी वो रंग लेके आई है।
आपको नहीं लगता ये सही मौका है इस समय, अगर चेयरपर्सन बढ़ा दें, थोड़ा घटा दें ब्याज दरों को, या फिर कम से कम ऐसा स्टांस दे दें कि चलो कोई बात नहीं, मैं एक सेफ्टी के लिए इस बार नहीं घटा रहा, लेकिन अगली बार एक 0.25 नहीं, 0.5% घटाऊंगा सीधा। ऐसा इतना एग्रेशन आ सकता है क्या? नम्रता, आप सुन पा रही हैं? आपको आवाज आ रही है? मेरा क्वेश्चन सुनाई दिया आपको? जी जरूर। यही चीज हमें काफी ज्यादा देखनी पड़ेगी। हमारा खुद का भी अनुमान यह है कि काफी ज्यादा संभावना अब बढ़ गई है कि अगले पॉलिसी तक तो नहीं, पर शायद Q4 FY25 तक एक शैलो रेट कटिंग साइकिल की शुरुआत हो सके, जिसमें हम 25 से 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट देखते हैं। और तो इसलिए यह पॉलिसी इन सब चीजों को भांपने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। साथ में मैं अभिषेक जी, मैं एक बात अगर आपको कहना चाहूं तो आज के समय में अगर इंडियन अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो रेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मायने रखता है वह है लिक्विडिटी। बिकॉज आपने काफी ज्यादा सुना होगा कि बैंक्स में एक डिपॉजिट की स्ट्रगल है, और इस चीज को एड्रेस करने के लिए आरबीआई क्या कदम उठाती है, क्या हमें सीआरआर में भी कोई कमेंट सुनने को मिलता है, यह सब चीज भी इस पॉलिसी में हम देखना चाहेंगे। पर आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि क्योंकि फेड में एक काफी दो चीजें जो काफी बदलाव आई है पिछले 2 पॉलिसी से, वह यह है कि एक तो फेड ने अपनी रेट कटिंग साइकिल शुरू कर दी है और उसमें 25 नहीं बल्कि एक साथ में ही 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट दिया है। और माने ना माने ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स में फेड की पॉलिसी सबसे ज्यादा इंडियन पॉलिसी मेकिंग के लिए मायने रखती है। और उसके साथ साथ क्योंकि चाइना में ग्रोथ वीक है, ओवरऑल ग्लोबल ग्रोथ में भी एक गति धीमी होती हुई दिख रही है। जी ठीक है। और नम्रता जी, एक और चीज है, देखिए इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं काबू में है। लगातार 2 महीने हमने जुलाई में और सितंबर में आरबीआई का जो एक रेंज है 4% का, उससे नीचे के हमने आंकड़े देखे हैं। कहा लास्ट ईयर की हम बात करें तो 7.5% पे हुआ करती थी, वो घट के 4%। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सिनेरियो बन गया है, मतलब रेट कटौती को लेकर कोई दिक्कतें आरबीआई को होनी नहीं चाहिए, या फिर आपको लगता है कि हाँ अभी इन्फ्लेशन उतना भी कूल नहीं हुआ है, अगर हम सालाना बेसिस पर देखें उसका वेट करेगा आरबीआई? अगर हम पूरे 3-6 महीने की महंगाई की बात करें तो हमारा आउटलुक काफी पॉजिटिव है। हमें यह भी लगता है कि जो आरबीआई का अनुमान है 4.5%, हो सकता है अंत में FY25 का इन्फ्लेशन 20 बेसिस पॉइंट कम आए। बट अभी अगर आप सिर्फ सितंबर सीपीआई की बात करें, जुलाई और अगस्त में इन्फ्लेशन 4% से नीचे चला गया था, बट वही हमें सितंबर का सीपीआई 5% के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अभी नियर टर्म में थोड़े रेनफॉल अच्छे रहे, पर रेनफॉल थोड़ी जरूरत से ज्यादा भी रहे। कई ऐसे इलाके हैं जहां पे बारिश कई ज्यादा होने की वजह से वेजिटेबल प्राइसेस में वापस से एक बढ़ोतरी आ गई है। और वेजिटेबल हमारे फूड इन्फ्लेशन के लिए एक लंबे अरसे से पेन पॉइंट है। वरना हम कहते आ रहे हैं कि अगर वेजिटेबल को हटा दे तो हमारा इंडिया का इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल्ड है। इनफैक्ट 3-3.5% के आसपास है। कोर इन्फ्लेशन काफी कम है। अगर पूरे सीपीआई बास्केट को देखें तो 300 आइटम में से 60% आइटम ऐसे हैं जो कि 4% से इन्फ्लेशन कम दिखा रहे हैं। बट यह एक कुछ फूड आइटम्स हैं जो अभी भी इन्फ्लेशन को सेंट्रल बैंक की टारगेट पे एक सस्टेन्ड बेसिस पे नहीं लाने दे रहे हैं। और अगर आरबीआई मूव ना करना चाहे तो यह एक नियर टर्म में एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है उनके स्टैंड को जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है। दीपक जी, देखिए कहीं ना कहीं अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो मिडिल ईस्ट वाला रिस्क है। क्रूड में हमने हाल फिलहाल स्पाइक देखा है, हालांकि अभी एक रेंज में है, और निश्चित तौर पर अगर मान लीजिए क्रूड बढ़ता है तो एक उसका स्पाइरल इफेक्ट होता है इकोनॉमी में महंगाई को लेकर। क्या आपको लगता है कि आरबीआई अभी उसका वेट करेगा?
हालांकि वहां पर स्थितियां गंभीर पिछले एक साल से हैं। हाल फिलहाल थोड़ा ईरान वाला मैटर भी उसमें जुड़ गया है, तो चीजें थोड़ी और हमें गंभीर दिख रही हैं। आपके क्या विचार हैं इस पर? नहीं, आप सही कह रहे हैं कि क्रूड एक रिस्क होता है इन्फ्लेशन के लिए, लेकिन हमने अभी लास्ट 2 साल से देख लिया है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क के कारण और जियोपॉलिटिकल रिस्क होने के बावजूद क्रूड जो है हमारा $70 to $90 के बैरल के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। अभी रिसेंटली जब क्रूड $70 गया था तो ऐसे नहीं कि डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस आपके कट हो रहे हैं, सिमिलरली 80-85 में डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हुए नहीं लग रहे। तो हमारा मानना है कि क्रूड जनरली ये रेंज में रहेगा और बेसिकली इसके वजह से हमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन ऊपर जाता हुआ नहीं लग रहा। एंड जैसे हम देखें कि हमारा कोर इन्फ्लेशन 3.5% के करीब है, हमारा सेंट्रल बैंकर हेडलाइन सीपीआई टारगेट कर रहा है। Season's greetings to each one of you. This is the 51st meeting of the Monetary Policy Committee, that is the MPC, and this is how it goes. The flexible inflation targeting framework has completed 8 years since its introduction in 2016. This is a major structural reforms of 21st century India. It stands out for its committee approach to decision making, transparency of policy making process and communication, accountability hinging upon quantitatively defined inflation target, and operational independence. Over the years, the framework has matured across various interest rate cycles and monetary policy stances. When I look back, I can say with confidence that the flexible inflation targeting has served us well over the years and has proved its mettle. It brought about an era of price stability in the pre-COVID-19 period, with inflation averaging around the target rate of 4%. Thereafter, despite continuing global turmoil from multiple sources in the last 4 years or so, the flexibility embedded in the flexible inflation targeting framework has helped us to effectively address these unprecedented challenges while supporting growth. Monetary policy in India was able to respond to the economic slowdown decisively and swiftly in the wake of the COVID-19 pandemic, and again preemptively during the build-up of inflationary pressures after the war began in Ukraine in early 2022. The prevailing well-balanced growth inflation dynamics is indeed a testimony to the success of this monetary policy framework. Let me now turn to the decisions and deliberations of the Monetary Policy Committee. The Monetary Policy Committee met on, and this time, as you would be aware, this time we have 3 new external members in the MPC. The Monetary Policy Committee with 3 new external members met on 7th, 8th and 9th October. And after assessing the evolving macroeconomic and financial conditions and the outlook, the MPC decided by a majority of 5 out of 6 members to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF rate, remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate and the bank rate, they stand at 6.75%. Further, the MPC decided unanimously to change the stance, that is the stance of the monetary policy, to neutral, and also decided to let me read it again. The MPC decided unanimously to change the stance to neutral and to remain unambiguously focused on a durable alignment of inflation with the target while supporting growth. The MPC noted that currently the macroeconomic parameters of inflation and growth are well balanced. Headline inflation is on a downward trajectory, though its pace has been slow and uneven. Going forward, the moderation in headline inflation is expected to reverse in September and likely to remain elevated in the near term due to adverse base effects, among other factors.
Food inflation pressures could see some easing later in the financial year on the back of strong Kharif sowing, adequate buffer stocks and good soil moisture conditions which are conducive for Rabi sowing. Adverse weather events continue to pose contingent risks to food inflation. Core inflation, on the other hand, appears to have bottomed out. Fuel component of the CPI remains in contraction. Domestic growth has sustained its momentum with private consumption and investment growing in tandem. Resilient growth gives us the space to focus on inflation so as to enable its durable descent to the 4% target. In these circumstances, the MPC decided to remain watchful of the evolving outlook in the coming months. Keeping in view the prevailing inflation and growth conditions and the outlook, the MPC considered it appropriate to change the stance to neutral and to remain unambiguously focused on a durable alignment of inflation with the target, while of course supporting growth. I would now turn to an assessment of the growth and inflation situation. First, let me talk in brief about the global growth conditions. The global economy has remained resilient since the last meeting of the MPC in August. Although downside risks from increasingly intense geopolitical conflicts, geoeconomic fragmentation, financial market volatility, and elevated public debt continue to play out. Manufacturing is showing signs of slowdown while services activity is holding up. World trade is exhibiting improvement. Inflation is softening, supported by lower energy prices. Growing divergence in inflation growth dynamics across countries has resulted in varying monetary policy responses. Let me now turn to domestic growth. Real GDP grew by 6.7% in the first quarter of this financial year, that is 24-25. And this was led by a revival in private consumption and improvement in investment. The share of investment in GDP reached its highest level since 2012-13. Government expenditure, on the other hand, contracted during the first quarter. On the supply side, gross value added, that is GVA, expanded by 6.8%, surpassing the GDP growth, aided by strong industrial and services sector activities. High-frequency indicators available so far suggest that domestic economic activity continues to be steady. The main components from the supply side, that is agriculture, manufacturing and services, they remain resilient. Agricultural growth has been supported by above normal southwest monsoon rainfall and better Kharif sowing. Higher reservoir levels with good moisture conditions of soil augur well for the ensuing Rabi crop. Manufacturing activity is gaining on the back of improving domestic demand, lower input costs and supportive policy environment from the government. 8 core industries output fell by 1.8% in August on a high base. Excess rainfall also dampened the production in certain sectors such as electricity, coal and cement in August. The Purchasing Managers Index, that is PMI for manufacturing at 56.5 for September remained elevated. The services sector continues to grow at a strong pace. PMI services at 57.7 in September indicates robust expansion. On the demand side, rural demand is trending upwards while urban demand continues to hold firm. Government consumption is improving. Investment activity remains buoyant with government capex rebounding from a contraction observed in the first quarter of this year. Private investment
also continues to gain steam on the back of expansion in non-food bank credit, higher capacity utilization, and rising investment intentions. On the external front, services exports is supporting overall growth. Looking ahead, India's growth story remains intact as its fundamental drivers, namely consumption and investment demand, are gaining momentum. Prospects of private consumption, the mainstay of aggregate demand, look bright on the back of improved agricultural outlook and rural demand. Sustained buoyancy in services would also support urban demand. Government expenditure of the centre and the states is expected to pick up pace in line with the budget estimates. Investment activity would benefit from consumer and business optimism, government's continued thrust on capex, and healthy balance sheets of banks and corporates. Taking all these factors into consideration, real GDP growth for 24-25 is projected at 7.2%, with Q2 at 7%, Q3 at 7.4%, and Q4 7.4%. Real GDP growth for Q1 of next financial year, that is 25-26, is projected at 7.3%. The risks are evenly balanced. I would now like to turn to inflation. Now, as anticipated, headline inflation softened significantly in July and August, with base effect playing a major role in the month of July. Food inflation experienced a certain degree of correction during these 2 months. Considerable divergence, however, was observed within the food subgroups. Now, whatever I am saying, I have given lot of data in the footnote of my statement, which as usual will be uploaded in the RBI website immediately after my statement is, immediately after I complete my statement. For example, I just now said that considerable divergence, however, was observed within the food subgroups. So this is backed up by the data which I have given in the footnotes. And in fact, all the statements that I am making are backed up by supportive data. They are in the footnotes. So those of you who are interested may like to have a look at them after it is uploaded. Now, deflation in fuel group deepened on softening electricity and LPG prices. Core inflation, on the other hand, edged up in July and August. The CPI print for the month of September is expected to see a big jump due to unfavorable base effects and pick up in food price momentum. And this would be caused by the lingering effects of a shortfall in production of onion, potato and chana dal, that is gram, in 2023-24, among other factors. The headline inflation trajectory, however, is projected to sequentially moderate in Q4 of the current financial year due to good kharif harvest, ample buffer stocks of cereals, and a likely good crop in the ensuing Rabi season. Unexpected weather events and worsening geopolitical conflicts continue as major upside risks to inflation. International crude prices have become volatile in the month of October, that is in the current month. The recent uptick in food and metal prices, and this is very important, the recent uptick in food and metal prices as seen in the FAO, that is Food and Agricultural Organization, and the World Bank price indices for September, if sustained, can add to the upside risks to CPI inflation. Taking into account all these factors, CPI inflation for 2024-25, that is for the current year, is projected at 4.5%, with Q2 at 4.1%, Q3 at 4.8%, and Q4 at 4.2%.
CPI inflation for the first quarter, that is Q1 of next financial year, that is 2025-26, is projected at 4.3%. The risks are evenly balanced. Now I have summarized our assessment of the domestic growth and the inflation conditions and the outlook as per our assessment. Now what do this raises the question, what do these inflation and growth conditions mean for monetary policy? The developments since the last meeting of MPC in August indicate further progress towards realizing a durable disinflation towards the target. Despite the near-term upsides to inflation from food prices, the evolving domestic price situation signals moderation in headline inflation thereafter. The agricultural crop outlook is turning out to be favorable with improving prospects of Kharif and Rabi output. These factors could lead to an easing of food inflation pressures, but this optimism is subject to weather-related shocks, if any. Core inflation is likely to remain broadly contained on continuing transmission of past monetary policy actions, unless, of course, there are surprises in global commodity prices. The prevailing and expected inflation growth balance, please mark my words, the prevailing and the expected inflation growth balance have created congenial conditions for a change in monetary policy stance to neutral. Even as there is greater confidence in navigating the last mile of disinflation, significant risks, I repeat, significant risks to inflation from adverse weather events, accentuating geopolitical conflicts, and the very recent increase in certain commodity prices continue to stare at us. The adverse impact of these risks cannot be undermined, cannot be underestimated. It's with a lot of effort that the inflation horse has been brought to the stable, that is closer to the target within the tolerance band compared to its highest or heightened levels 2 years ago. We have to be very careful about opening the gate, as the horse may simply bolt again. We must keep the horse in tight leash so that we do not lose control. Going forward, we need to closely monitor the evolving conditions for further confirmation of the disinflationary impulses. I would now like to turn to the liquidity and financial market conditions. System liquidity remained in surplus during August and September and also in early October, with a pickup in government spending and decline in currency in circulation. Liquidity conditions, however, had turned into deficit for a brief period during the latter half of September, with the buildup of government cash balances on account of tax-related outflows. In sync with the shifting liquidity conditions, the Reserve Bank proactively conducted two-way operations to ensure alignment of interbank overnight rate with the policy repo rate. Across the term money market segments, the yields on 3-month treasury bills, that is T-bills, and commercial papers issued by non-banking financial companies, that is NBFCs, eased, while that on certificates of deposits firmed up marginally. The 10-year G-Sec yield softened in August-September on global and domestic cues, including policy pivot in the United States and also in some major economies. And also, these are not the only factors, but the yields in August-September, I'm talking about the 10-year G-Sec yields, they softened somewhat in August and September due to multiple factors, which would include pivot in the monetary policy of the US and some major economies, improved global investor sentiment, benign domestic inflation, and accelerated fiscal consolidation. The term premium, that is 10-year G-Sec
yield minus 3-month T-bills yield has remained stable in the recent few months. Transmission to the credit market has been satisfactory. Moving forward, the Reserve Bank will continue to be nimble and flexible in its liquidity management operations. We will deploy an appropriate mix of instruments to modulate both frictional and durable liquidity so as to ensure that money market interest rates evolve in an orderly manner. During the current financial year, that is up to 8th of October, that is till yesterday, the exchange rate of the Indian rupee has remained largely range bound. The Indian rupee also continued to be the least volatile among peer EME currencies. This was so even during the high volatile episode following the unwinding of the yen carry trade in early August this year. The lower volatility of the Indian rupee reflects India's strong macroeconomic fundamentals and improved external sector outlook. I would now turn to financial stability. The health parameters of banks and NBFCs in India continue to be strong. There has been some recent commentary on the likelihood of stress build-up in a few unsecured loan segments like loans for consumption purposes, microfinance loans, and credit card outstandings. The Reserve Bank is closely monitoring the incoming information and will take measures as may be considered necessary. Banks and NBFCs on their part need to carefully assess their individual exposures in these areas, both in terms of size and quality. Their underwriting standards and post-sanction monitoring have to be robust. Continued attention also needs to be given to potential risks from inoperative deposit accounts, cybersecurity landscape, mule accounts, and a few other factors which we have been stressing and highlighting time and again in the public domain as well as in our interaction with the banks and NBFCs. Now, overall, I would again like to stress that our banking and the NBFC sector, that is the financial sector, remains healthy, resilient, and stable. NBFCs in particular have registered an impressive growth over the last few years. This has resulted in more credit flow to remote and underserved segments, bolstering financial inclusion. While the overall NBFC sector remains healthy, let me re-emphasize, while the overall NBFC sector remains healthy, I have a few messages to certain outliers. First, it is observed that some NBFCs are aggressively pursuing growth without building up sustainable business practices and risk management frameworks, which should be commensurate with the scale and complexity of their portfolio. An imprudent growth at any cost approach would be counterproductive for their own health. Second, driven by significant accretion to their capital from both domestic and overseas sources, and sometimes under pressure from their investors, some NBFCs, including microfinance institutions and housing finance companies, are chasing excessive returns on their equity. While such pursuits are in the domain of the boards and managements of NBFCs, concerns arise when interest rates charged by them become usurious and get combined with unreasonably high processing fees and frivolous penalties. These practices are sometimes further accentuated by what appears to be a push effect as business targets drive retail credit growth rather than its actual demand. I am not generalizing it for the whole NBFC sector. There are certain NBFCs where it is happening. Bilaterally we are engaged with them, but I think this is a message which it's important not only for these outliers to keep in mind, but I think this should act as a guidance for the entire sector. Now, the consequent high cost
I was talking about the push effect, that is business targets driving retail growth rather than its actual demand. In that context, I would like to say that the consequent high cost and high indebtedness could pose financial stability risks if not addressed by these NBFCs in time. Third, NBFCs may review their prevailing compensation practices, variable pay and incentive structures, some of which appear to be purely target-driven in certain NBFCs. Such practices may result in adverse work culture and poor customer service. To sum up, it is important that NBFCs, including MFIs and housing finance companies, follow sustainable business goals, a compliance-first culture, a strong risk management framework, a strict adherence to fair practices code, and a sincere approach to customer grievances. The Reserve Bank is closely monitoring these areas and will not hesitate to take appropriate action if necessary. Self-correction by NBFCs would, however, be the desired option. Coming to external sector, India's current account deficit, that is CAD, widened to 1.1% of GDP in the first quarter of this financial year, that is 24-25, and this was on account of higher trade deficit. Buoyancy in services exports and strong remittance receipts are expected to keep the current account deficit within the sustainable level. On the external financing side, foreign portfolio investment, that is FPI flows, have seen a turnaround from the net outflows of $4.2 billion in April and May this year. They have turned from net outflows. In April and May, we had net outflow of $4.2 billion. Now they have now turned to net inflows of $19.2 billion during June to October, and this is the figure till 7th of October. Foreign direct investment, that is FDI flows, remain strong in 24-25 as both gross and net FDI flows have improved in April and July. While external commercial borrowings moderated, non-resident deposits recorded higher net inflows compared to last year. India's foreign exchange reserves have already crossed a new milestone of $700 billion. Overall, India's external sector remains resilient as key external sector vulnerability indicators continue to improve. And when I say key external sector vulnerabilities continue to improve, I have backed it up by the data in the footnote of the statement. On the whole, we remain confident of meeting our external financing requirements comfortably. I shall now announce certain additional measures. The first relates to responsible lending conduct, levy of foreclosure charges and or prepayment penalties on loans. The Reserve Bank has taken several measures over the years to safeguard consumer interest. As part of these measures, banks and NBFCs are not permitted to levy foreclosure charges or prepayment penalties on any floating rate term loan sanctioned to individual borrowers for non-business purposes. That is, for purposes other than business. It is now proposed to broaden the scope of these guidelines to include loans to micro and small enterprises, that is MSEs. A draft circular in this regard shall be issued for public consultation. The second announcement relates to discussion paper on capital raising avenues for primary urban cooperative banks, that is for UCBs. The Reserve Bank has undertaken several initiatives in recent years to strengthen the UCB sector. Such initiatives include issuance of regulatory guidelines in 2022 for issue and regulation of share capital and securities by the urban cooperative banks. To provide more flexibility and avenues to the UCBs, that is urban cooperative banks, to raise capital, a discussion paper on capital raising avenues for UCBs will be issued for feedback and suggestions from
stakeholders. The third announcement relates to creation of Reserve Bank Climate Risk Information System. Climate change is emerging as a significant risk to financial system world over. This makes it necessary for regulated entities to undertake robust climate risk assessment, which is sometimes hindered by gaps in high quality climate related data. To bridge these data gaps, the Reserve Bank proposes to create a data repository, namely the Reserve Bank Climate Risk Information System, or in short RBCRIS, Reserve Bank Climate Risk Information System, that is RBCRIS. The next announcement relates to UPI, where we are enhancing certain limits for the various transactions. UPI has transformed India's financial landscape by making digital payments accessible and inclusive through continuous innovation and adaptation. To further encourage wider adoption of UPI and make it more inclusive, it has been decided first to enhance the per transaction limit, in UPI 123 Pay from rupees 5,000 to rupees 10,000. And second, it has also been decided to increase the UPI Lite wallet limit from rupees 2,000 to rupees 5,000 and per transaction limit from rupees 500 to rupees 100. The final announcement relates to introduction of beneficiary account name lookup facility. Let me explain what it means. At present, UPI and Immediate Payment Service, that is IMPS, provide a facility for the remitter of funds to verify the name of the receiver of the funds, that is the beneficiary, before executing a payment transaction. It is now proposed to introduce such a facility for RTGS as well as the NEFT systems. This facility will enable the remitter to verify the name of the account holder before effecting funds transfer to him or her through RTGS or NEFT. This facility will also have the effect of reducing the possibility of wrong credits and frauds. Let me now conclude. Today, the Indian economy presents a picture of stability and strength. The balance between inflation and growth is well poised. India's growth story remains intact. Inflation is on a declining path, although we still have a distance to cover. The external sector demonstrates the strength of the economy. Forex reserves are scaling new peaks. Fiscal consolidation is underway. The financial sector remains sound and resilient. Global investor optimism in India's prospects is perhaps at its highest ever. We are, however, not complacent. I repeat, we are not complacent, especially amidst the rapidly evolving global conditions. The monetary policy action today reflects the MPC's assessment that at the current juncture, it would be appropriate to have greater flexibility and optionality to act in sync with the evolving conditions and the outlook. We stand unambiguously committed to ensure durable alignment of inflation with the target while supporting growth. In the prevailing macroeconomic conditions and the outlook, Mahatma Gandhi's words remain highly relevant. And I quote, "When the method is good, success is bound to come in the end." Thank you. Namaskar. तो शक्तिकांता दास, मिस्टर गवर्नर ने लास्ट में जो जाते जाते एक बात बोली ना, कि बहुत अच्छी बात बोली कि अगर सिस्टम अच्छा है ना तो आप जीतेंगे ही जीतेंगे।
तो सिस्टम प्रिवेल्स, तो उसी सिस्टम की वो बात बता रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें जो मार्केट को चाहिए थी वो उन्होंने दी, हालांकि रेट कट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 5 में से 6 में से 5 लोगों का ये मानना है कि अभी रेट कट करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए रेट कट तो नहीं किया। लेकिन जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे, इकोनॉमी पैरामीटर्स पे बोल रहे थे वो काफी हद तक ठीक है। उन्होंने अब सारे चीजों को छुआ अमूमन, लेकिन एक चीज जो बाजार को थोड़ी आके चुभी, या फिर मैं बोलूंगा कि 600 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी को खड़ा हुआ, 400 पॉइंट तोड़ दिया, वो था एनबीएफसी के लोन बांटने के तरीके को लेकर। उनको ये बात साफ साफ कहनी पड़ी फिर से इस मीटिंग में कि भाई एनबीएफसी के लोन बांटने के तरीके, उनके पेनल्टीज लगाने के तरीके, उनके इसको हैंडल करने के तरीके और कई मायनों में भी ठीक नहीं चल रहे हैं, खासकर अनसिक्योर्ड लोन के अंदर। तो उन्होंने ये तो कहा कि पूरी एनबीएफसी को मैं नहीं बोल रहा, बट हाँ स्पेसिफिकली हम बोल रहे हैं, तो बायलैटरल उनसे हम बातचीत भी कर रहे हैं। तो कुछ चीजें बाजार के लिए बहुत अच्छी रही। जैसे उन्होंने ग्रोथ के बारे में बोला, उन्होंने कहा ग्लोबल पैरामीटर्स पे हम ठीक हैं, हमारा बैंकिंग सिस्टम ठीक है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर ठीक है, हमें नहीं लगता कि कुछ ज़रूरत है। और एक और पॉइंट भी उन्होंने ये कहा कि हमारा जो फॉरेन करेंसी है, जो हमारे पास रिजर्व्स होते हैं फॉरेन करेंसीज के, वो भी 70,000 करोड़ से ज़्यादा के हैं डॉलर टर्म्स में। तो ज़्यादातर चीज़ें ठीक थी मैं से बोलूँगा, लेकिन वो एनबीएफसी वाला जो मूड था ना, वो थोड़ा स्पेसिफिक मूड है और मेरे को लग रहा है कि शायद उसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में भी दिखेगा। मेरे साथ मेहमान तैयार हैं, विवेक राठी जी हैं नाइट फ्रैंक से, दीपक अग्रवाल कोटक एएमसी से, सुनील कुमार सिन्हा इकोनॉमिस्ट हैं, रजनी सिन्हा है चीफ इकोनॉमिस्ट हैं केयर एज की। आप सभी मेहमानों का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक एक करके मैं टेक आपसे लेना शुरू करूंगा। रजनी जी पहले आपसे कर रहे हैं शुरू। मिस्टर गवर्नर को आपने सुना, एनबीएफसी वाला हिस्सा अगर हटा दिया जाए तो ज्यादातर चीजें अच्छी बोली गई हैं, एक बार आपका टेक मैम। मैम एक बार अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज फिर अच्छे से आएगी। तो जैसा कि आपने हाईलाइट किया, आरबीआई गवर्नर ने काफी पॉजिटिव पिक्चर पोर्ट्रे किया है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ में भी उन्होंने ऑप्टिमिज्म दिखाया है और जो ग्रोथ प्रोजेक्शन था 7.2% का, उसको मेंटेन किया है। इन्फ्लेशन की बात करें तो उसमें भी कंपेयर टू लास्ट मीटिंग आरबीआई गवर्नर थोड़े ऑप्टिमिस्टिक थे। उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन मॉनसून अच्छा रहा है और इन्फ्लेशन यहाँ से मॉडरेट होने का चांसेस है। बट एट द सेम टाइम, जबकि उन्होंने काफी पॉजिटिव पिक्चर पोर्ट्रे किया है, बट जहां पे भी कॉशियसनेस की जरूरत है उसको हाईलाइट किया है। उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन मॉडरेट होने का चांसेस है क्योंकि मॉनसून अच्छा रहा है, बट एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी हाईलाइट किया है कि वेदर कंडीशंस के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, बाद में भी वो एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकता है। जियोपॉलिटिकल कंडीशंस अभी ठीक नहीं है। हमने लास्ट वन मंथ में देखा है कि कमोडिटी प्राइसेस सडनली शार्पली बढ़ गई है चाइना स्टिमुलस के कारण। तो ये सब कारणों के कारण अभी भी हमें कॉशियस रहने की जरूरत है इन्फ्लेशन के बारे में। तो उन्होंने, जैसा कि आपने कहा, पॉजिटिव पिक्चर पोर्ट्रे किया है, बट एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी दिखाया है कि अभी भी हम लोग को कॉशियस रहने की जरूरत है। इन्फ्लेशनरी रिस्क, कुछ रिस्क अभी भी है। जी, नहीं बात बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने चेक एंड बैलेंसेस किया है, ऐसा नहीं कि सबको खुश कर दिया। ये बात कह के देखिए सब कुछ ठीक है। उन्होंने कुछ बातें ऐसी भी बताई हैं बीच में कि जिसमें अभी भी कॉशियस है, हालांकि उन्होंने स्टांस चेंज कर दिया अपना, वो न्यूट्रल पे ले आए हैं। एक बार मिस्टर सिन्हा भी मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उनसे भी मैं जरा एक बार पता कर लेता हूँ। सुनील कुमार सिन्हा, सुनील जी नमस्ते, जरा आपका टेक क्या है बताइएंगे प्लीज। देखिए, जो आज की पॉलिसी है उससे एक चीज तो साफ जाहिर होती है कि जो इकोनॉमी है वो एक ऐसे मुकाम पे है जहां पे ग्रोथ अभी भी रेजिलिएंट है। और जहां तक इन्फ्लेशन का सवाल है, इन्फ्लेशन में कुछ गिरावट जरूर देखने को मिली है, परंतु जिस किस्म के अभी जियोपॉलिटिकल हालात हैं और जिस किस्म के नंबर्स इन्फ्लेशन के आ रहे हैं, जिसमें कि अभी जो नंबर है वो ये जरूर दर्शा रहा है कि इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन कम हुआ है, परंतु वो ज्यादातर जो है बेस इफेक्ट की वजह से है। और जैसे ही
अक्टूबर ऑनवर्ड्स बेस इफेक्ट घटेगा, उसके एक बार फिर बढ़ने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट आज की पॉलिसी का है वो है चेंज इन दी पॉलिसी स्टांस। इससे पहले कि आरबीआई रेट कट की बात करे, स्टांस को चेंज करना जरूरी है, और वो आज की पॉलिसी में हमें देखने को मिला है। चेंज इन स्टांस की वजह से एक चीज तो बड़ी साफ हो जाती है कि अगर आने वाले समय में जो इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी है वो अगर अपेक्षा के अनुरूप रहती है तो पॉलिसी दरों में कटने की संभावना बढ़ जाती है। ये नहीं है कि पॉलिसी रेट कट होंगे ही होंगे, परंतु संभावना जरूर बढ़ जाती है, क्योंकि जब आपका स्टांस न्यूट्रल है तो आप जो है ओवरऑल पॉलिसी रेट को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जो नोट करनी चाहिए। और दूसरी चीज वो ये लगातार कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ओवरऑल ग्रोथ है वो रेजिलिएंट है। तो ग्रोथ के टर्म्स पे बहुत ज्यादा इस समय वरी करने की जरूरत नहीं है, और ये सारी चीजें तब हो रही है जबकि जियोपॉलिटिकल कंडीशंस बहुत कंडूसिव नहीं है। फिर भी हम अपने जो जीडीपी की दरों को बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं, और जहां तक इन्फ्लेशन को फाइट करने का सवाल है वो भी जो है काफी हद तक कामयाब रहा है, परंतु अभी मंजिल दूर है। तो कोशिश यही रहेगी मॉनेटरी पॉलिसी या जो अभी अनाउंसमेंट हुए हैं कि इसको ड्यूरेबल बेसिस पे 4% के आसपास लाया जाए, और उसकी संभावना जो है वो फोर्थ क्वार्टर ऑफ दिस फिस्कल या अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में नजर आ रही है। तो हमें पॉलिसी रेट कट के लिए अभी भी शायद कुछ वेट करना पड़ेगा। ठीक है, पॉलिसी रेट कट के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सुनील सर का ये कहना है। लेकिन ये कि हाँ, थोड़ा सा माहौल जरूर यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्टांस को न्यूट्रल किया गया है विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन से घटा के। लेकिन जो एनबीएफसीज को लेकर थोड़े से सख्त लहजे में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा, उन्होंने कहा कि एनबीएफसीज बिना रिस्क मैनेजमेंट किए लोन बांट रही हैं, तौर तरीकों पर सीधे तौर पर सवाल उठाए गए, और उन्होंने ये भी कहा कि हम जरूरत पड़ी तो एक्शन भी लेंगे। हमारे साथ इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, मुथूट माइक्रोफिन के सीईओ सदाफ सैयद साहब हैं। सदाफ जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूं मैं। सर ये बताइए कि आप इस कमेंट को किस तरह से देख रहे हैं? मैं कोई कंपनी स्पेसिफिक तो टिप्पणी कोई नहीं कर रहा है, बट हाँ ये चीजें लगातार बार बार उठ रही हैं, तौर तरीकों को लेकर सवाल है। आपका व्यू क्या है सर, और किस तरह से आप देख रहे हैं इस कमेंट को आरबीआई गवर्नर के? देखिए अभिषेक, आरबीआई एक बहुत ही प्रूडेंट रेगुलेटर है, काफी प्रोएक्टिव उन्होंने पॉलिसी मेकिंग में साथ दिया है जब से कोविड और उससे पहले भी। तो मुझे लगता है आरबीआई गवर्नर बहुत स्पेसिफिक थे कि वो आउटलेयर की बात कर रहे हैं, मतलब वो बात कर रहे हैं कुछ एनबीएफसीज की जो कि आरबीआई के नजर में जो ज्यादा अधिक रेट चार्ज कर रहे हैं या फिर प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी नहीं फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि ये वाइडर एनबीएफसी स्पेक्ट्रम के लिए नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि ये सही स्टैंड है, क्योंकि कुछ एक दो आइसोलेटेड एनबीएफसी जो नहीं फॉलो करते हैं उसकी वजह से सेक्टर का नुकसान होता है, एक परसेप्शन गलत बनता है। आरबीआई ने बहुत फोकस करा है कि फेयर प्रैक्टिस कोड ऑफ कंडक्ट आपको फॉलो करना चाहिए और गवर्नेंस मैकेनिज्म अच्छा रखना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखना चाहिए और बहुत ही अनुशासन से लेंड करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग की बात करी तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आई थिंक उन्होंने रीएम्फसाइज करा है, ये अच्छी बात है इंडस्ट्री के लिए और सेक्टर के लिए। एक बैलेंस ग्रोथ रहेगी इसके कारण, तो ये मेरे हिसाब से तो एक अच्छा मूव है। और आउटलेयर को कंट्रोल करना जो कि एक रेगुलेटर का भी जिम्मा है। मैं एक इंडस्ट्री एसआरओ को भी रिप्रेजेंट करता हूं, साधन को, आई एम अ को चेयर देयर। तो हमारे लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आउटलेयर हैं, जो एनबीएफसी ज्यादा रिस्क लेके काम कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करा जाए। बट ऐसा नहीं है कि पूरा सेक्टर ही एक तरीके से इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। सेक्टर काफी मैच्योर है, काफी बैलेंस है, हमारे नंबर ऑफ एनबीएफसीज लिस्टेड हैं, सो सब चीजें ट्रांसपेरेंट तरीके से मॉनिटर होती हैं। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा मूव है आरबीआई की तरफ से
जो आउटलेयर को कंट्रोल करने के लिए वो रिस्क मैनेजमेंट ओवरऑल सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। ठीक है। हमारे साथ एक और मेहमान हैं नाइट फ्रैंक इंडिया के विवेक राठी। विवेक जी नमस्कार। देखिए दरें तो नहीं घटी और आप जिस इंडस्ट्री से डील करते हैं सर वहां हम देख रहे हैं कि लगातार मोमेंटम बरकरार है। फेस्टिव सीजन के हम बिल्कुल बीचों बीच में आके खड़े हैं। आप ये बताइए कि अब चूंकि यहां से शायद उम्मीदें बढ़ेंगी, मतलब 2 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, वो फरवरी वाली पॉलिसी होगी या फिर दिसंबर वाली पॉलिसी होगी, देखना होगा कि दरें कब घटती हैं। लेकिन आपको क्या उम्मीदें हैं कि ये जो स्टांस को न्यूट्रल किया है आरबीआई गवर्नर ने, इससे कितना कंस्ट्रक्टिव माहौल बन रहा है रेट कट को लेकर और इंडस्ट्री को लेकर अगर मैं पूछूं रियल एस्टेट को लेकर, तो कितना ऑप्टिमिज्म बन रहा है यहां से? जी ये बात जरूर है, जो भी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेगमेंट्स है, पर्टिकुलरली चाहे आप रियल एस्टेट की, हाउसिंग की बात कर लें या व्हीकल्स की बात कर लें, इन पर ब्याज दरों का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। कस्टमर की जो परचेजिंग एबिलिटी है डायरेक्टली लिंक्ड होती है, क्योंकि ये 1 या 2 साल की इनकम के बेसिस पे प्रोडक्ट नहीं खरीदा जा सकता, उसमें लंबा कमिटमेंट लगता है। तो इसी के साथ में ये भी बात सही है कि प्रीमैच्योर इंटरेस्ट रेट साइकिल टर्न नहीं की जा सकती है, जिसके लिए सेंट्रल बैंक्स हमेशा ध्यान रखती है कि हम प्रीमैच्योर अगर सेंट्रल रेट साइकिल टर्न कर दें तो तकलीफ हो सकती है। तो क्योंकि ग्रोथ का माहौल स्ट्रांग है, आरबीआई ने इस तरीके से ये स्टैंड लिया है कि थोड़ा इंतजार करेंगे और फिर रेट कट में, क्योंकि आज स्टैंड चेंज हो गया है, तो स्वाभाविक है कि रेट कट 3 महीने 2 महीने बाद हो या 4 महीने बाद हो, अगली 2 एमपीसी में होगा। कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, अब लास्ट हम जब देख रहे हैं इसी जो रेट साइकिल है, लास्ट 4 सालों में जब शुरू में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगी तो कस्टमर्स में एक तरीके की तकलीफ देखी गई, क्योंकि जब भी वो विजिट कर रहे थे प्रोजेक्ट्स में, अगले हर दूसरे विजिट में उनकी एलिजिबिलिटी कम हो रही थी इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने की वजह से। लेकिन फिर भी क्योंकि होम बाइंग को लेकर के सेंटिमेंट इतना पॉजिटिव रहा है लास्ट 4 सालों में और इनकम ग्रोथ भी हुई है, जिसके वजह से कस्टमर्स ने इन बढ़ते हुए ब्याज दरों के बावजूद अपना कमिटमेंट जो है प्रॉपर्टी परचेज को लेकर के वो जारी रखा। जब फरवरी 2023 में इंटरेस्ट रेट साइकिल में स्टेबिलिटी आ गई ग्लोबली भी एज वेल एज इंडिया में, तो कस्टमर्स की तरफ से एक बहुत बड़ा रिलीफ देखा गया, जिससे के मद्देनजर अगर आज आप लेटेस्ट आंकड़े भी देखेंगे सितंबर 2024 क्वार्टर के, तो ये जो हाउसिंग सेक्टर में माहौल है सेल्स का, लॉन्चेस का, वो माहौल बरकरार है। इस पिछले महीने में जब हमने श्राद्ध के नंबर्स देखे, उसमें भी हम ग्रोथ देख रहे हैं पिछले साल के श्राद्ध के कंपैरिजन में। अभी हम जो नवरात्रि का फेस्टिवल सीजन चल रहा है, इसमें भी हम ग्रोथ देख रहे हैं हाउसिंग सेल्स में। तो ओवरऑल एक बहुत पॉजिटिव माहौल है, और जब रेट लेवल्स एलिवेटेड लेवल्स है फिर भी कस्टमर्स का कमिटमेंट चालू है, तो इसका मतलब है कि जरूर जब रेट साइकिल टर्न होती है तो इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। कौन से सेगमेंट में आएगा? उन्हीं सेगमेंट्स में जिनका पार्टिसिपेशन लास्ट 1.5 से 2 सालों में पीछे छूट गया है। खास करके मैं बात कर रहा हूं अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट की, जहां पर एक कस्टमर केवल अपनी इनकम के बेसिस पे, अपने अफोर्डेबिलिटी के बेसिस पे, जो मॉर्गेज रेट से लिंक्ड है उसके बेसिस पे कमिटमेंट करता है। तो अगर हमें लोअर सेगमेंट्स को, मिड सेगमेंट्स को फिर से मार्केट में लाना है तो रेट साइकिल के टर्न का हमें इंतजार करना पड़ेगा। अदरवाइज जो हायर सेगमेंट के कंज्यूमर्स है वो अभी बढ़े हुए ब्याज दरों के बावजूद भी परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग मेहमान अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं। दीपक जी से हमने प्री पॉलिसी से पहले भी एक बार टेक लिया था और अब पॉलिसी के बाद भी उनका एक टेक ले लेते हैं। दीपक जी, एक बार आपका टेक, आपने इस पॉलिसी में क्या रीड किया? सो बेसिकली आरबीआई का जो एक्शन है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस न्यूट्रल की तरफ चेंज कर सकता है, तो आरबीआई का फाइनल डिसीजन भी उसी लाइन पर आया है। और आरबीआई ने इन्फ्लेशन और ग्रोथ पे रिस्क इवनली बैलेंस बताया है, और इन्फ्लेशन जो Q1 FY26 है उसे आरबीआई ने 440 से 430 की तरफ नीचे रिड्यूस किया है। और लेट से यहां से लेकर दिसंबर तक फेड की और 2 पॉलिसी होगी जहां पे फेड 50 बेसिस पॉइंट और रेट कट करता हुआ लग रहा है।
और तो हमें लगता है कि दिसंबर या फरवरी ये में आरबीआई एक 25 बेसिस पॉइंट रेट कट कर सकता है, और ये पूरे अगले एक साल में हमें 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा रेट कट आज के डेट में नहीं दिख रहे। तो हमें लग रहा है कि अगले एक साल में 50 बेसिस पॉइंट रेट कट होंगे। और हमारी जीसेक गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में देखें तो डिमांड सप्लाई काफी फेवरेबल है। ओवरनाइट न्यूज आई है कि इंडियन बॉन्ड्स फुटसी ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स में भी इंक्लूड हो चुके हैं, जिसके कारण अगले साल FY26 में हमें $4.5 बिलियन के करीब फ्लोज उसके कारण आएंगे। प्लस जेपी मॉर्गन के हर महीने $1 से $2 बिलियन फ्लो आ रहे हैं। पॉलिसी के बाद हमने देखा है कि गवर्नमेंट की जो 10 साल की कॉस्ट ऑफ बोरिंग है, जो बॉन्ड यील्ड है, वो 5 बेसिस पॉइंट से नीचे आई है। जो 680 के करीब ट्रेड करी थी वो 675 के करीब आई है। आरबीआई ने जो स्टांस लिया है, जिससे एक्सपेक्टेशन रहेगी रेट कट्स होंगे अगले 6 महीने में और डिमांड सप्लाई फेवरेबल है, तो गवर्नमेंट की जो 10 साल की कॉस्ट ऑफ बोरिंग है, ये हमें लगता है कि अगले 3 से 6 महीने में 6.5% के करीब जा सकती है। ठीक है दीपक जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने अच्छे से एनालिसिस करके बताया। विवेक सर थैंक यू वेरी मच, आपका भी। सुनील कुमार सिन्हा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रजनी सिन्हा आपका शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सदाफ सैयद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाल के अपना टेक हमको दिया, बताया कि पॉलिसी में क्या रीड आउट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मैं मार्केट पे 1 मिनट के लिए जरा वापस लौटूंगा, और इसलिए क्योंकि मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त उछाल आया है। 650 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी बैंक निफ्टी पे बन गई है। ना केवल बैंक निफ्टी डेज हाई आ गया, बल्कि शॉर्ट्स को कवर कराया। अगर आप सुबह की कमेंट्री सुन रहे होंगे तो हमने आपके सामने 2 लेवल्स रखे थे, पहला 25,200 और दूसरा 51,500। 51,500 स्क्रीन पे मेरे को दिख रहा है। 1 मिनट के लिए ऑप्शन हटाइए, मैंने भी बोला ही नहीं तो इससे पहले आपने ऑप्शंस लगा दी। 51,500 का टारगेट लगाना था, वो लग गया। 25,200 निफ्टी का दिखना था, वो भी दिख गया। तो दोनों चीजें हमने अचीव कर ली हैं, दोनों टारगेट्स अचीव हो गए हैं। तो कुल मिला के आपको अपने टारगेट के साथ, अपनी इंटेलिजेंस के साथ चलना है, और जो डाटा आपको समझा रहा है, बता रहा है, वो आपको लेना है। आज सुबह हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि 0.25% होगा या फिर कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। मार्केट ने इन दोनों चीजों को डिस्काउंट किया था, लेकिन हाँ, ज्यादा तेज इंपैक्ट तब आता जब 0.25% का आता। तो वो इंपैक्ट आप देखते 1000 पॉइंट का भी आ सकता था बैंक निफ्टी पर, लेकिन मिस्टर गवर्नर ने पूरी रोजी पिक्चर दिखाई आपके सामने और बेहतर तरीके से सारे डाटा को टच अपॉन करते हुए बताया। तो इसलिए मार्केट पार्टिसिपेशन का डर कम हुआ है। डर कैसे पता लगा? वो था इंडिया विक्स से। आप देखो इंडिया विक्स अब 14 के लेवल को भी छोड़ चुका है। कल कहां पे हम 15 का विक्स डिस्कस कर रहे थे और आज हम 13.5 के विक्स पे आके खड़े हो गए हैं। 2 दिन में हमारा डर छू मंतर हुआ है। ये डर जैसे से कम होगा, मैंने आपको कल भी बात बताई थी, आज फिर से बता देता हूं, आज सुबह भी बताई थी। आप सिर्फ विक्स को कम करो, बाजार के पास ऑलरेडी सारा मसाला है बॉस, पूरी खिचड़ी का दाल चावल घी मसाला सब कुछ है, बस गैस जलाना बाकी था। ये गैस विक्स से जलता है। आप डर कम करो, 1 मिनट में सब कुछ तैयार, एग्जैक्टली 1 मिनट के अंदर सब कुछ तैयार। 24 घंटे लिए मार्केट को उस फेज में आने के लिए। एक चीज मैं आपको और नोटिस कराता हूं, वो 51,000 की कॉल और 51,000 के पुट चलते चलते आपको हमने बताया था आज हीरो और जीरो के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। एक जीरो भी बनी है और एक हीरो भी बनी है। मैं दोनों कॉल्स और पुट आपको दिखाता हूं। ये कॉल है 180% का राइज हुआ इसके अंदर। ये कीमत कितनी थी? 200 रुपए। आपको याद होगा मैंने बताया था कि दोनों की कीमत 200 रुपए है। उसमें से एक को आज बलिदान देना पड़ेगा, लास्ट में दोनों को बलिदान भी देना पड़ सकता है। लेकिन आज एक हीरो जीरो का ट्रेडर्स इसमें से ढूंढेंगे। 650 रुपए की होगी और 200 रुपए वाली पुट कॉल। अब जरा पुट दिखाओ, उसकी कीमत मात्र 28 रुपए रह गई है और 88% उसमें से पैसा चला गया। ये एक अच्छी चीज है। अगर आज आप सही साइड पे होते, मान लीजिए आप कॉल लेके बैठे होते, तो आज आपका इंट्राडे गेन, आपका पैसा 2 गुना नहीं 3 गुना हुआ होता, क्योंकि 200 वाला सीधा माल 600 हो गया। 3 गुना पैसा किसे कहते हैं। और अगर आप गलत साइड पे बैठे यानी कि पुट की तरफ बैठ गए, तो आज आपका पैसा आधा नहीं पूरा ही साफ हो गया होता, करीब करीब। तो इसके लिए यही आरबीआई गवर्नर की चिंता है, यही सेबी चेयरपर्सन की चिंता है, ये देश के वित्त मंत्री की चिंता है, लेकिन ये मार्केट की खूबसूरती है जो इस समय दिख रही है। ठीक है जी, कार्यक्रम को यही समेट रहे हैं। अगला कार्यक्रम कॉलर शो से जुड़ा हुआ है। अगर आपका कोई सवाल है तो जरूर पूछेगा। मेहमान हमारे साथ जुड़ जाएंगे। 11 बज चुके हैं। आज को आधा घंटा थोड़ा लेट चलेगा कार्यक्रम, लेकिन आप इसका फायदा जरूर लीजिएगा। मेरे को और अभिषेक को इजाजत दे सकते हैं। नमस्कार।